हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन की यारी। आज हम जानेंगे कंटिन्यूस सीरीज डेटा से क्वार्टाइल डिविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट क्वार्टाइल इन कंटिन्यूस सीरीज, फर्स्ट टेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्वार्टाइल डिविएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्यू डी इज इक्वल टू अपर क्वार्टाइल यानी Q3 माइनस लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 divided by 2. Now in the given series we take cumulative frequency, that is CF. Next step is to calculate lower quartile and upper quartile. Therefore Q1 is equal to the size of number of observation, means n are 59 divided by 4 item. After solving this we get lower quartile item Q1 is equal to the size of 14.75 item in CF is 23 and the group is 20 to 30. Therefore Q1 is equal to L120 plus L2 30 minus L120 divided by current group frequency 11 into quartile 1 item 14.75 minus previous group CF 12. After solving this we get Q1 is equal to 22.5. Now upper quartile Q3 is equal to 3 into number of observation 59 divided by 4 item. After solving this we get upper quartile items Q3 is equal to the size of 44.25 item in CF is 50 and the group of 50 is 40 to 50. Therefore Q3 is equal to L1 40 plus L2 50 minus L1 40 divided by same class frequency 12 into quartile item 44.25 minus previous class CF 38. After solving this we get Q3 is equal to 45.20. Now put this Q1 and Q3 value in quartile deviation formula. Therefore QD is equal to Q3, that is 45.20 minus Q1 22.5 divided by 2. After solving this QD is equal to 11.35. Last we calculate interquartile range is equal to Q3 45.20 minus Q1 22.5. After solving this we find the interquartile range is equal to 22.7. आई होप आपको कंटिन्यूस सीरीज डेटा से क्वार्टर डिविएशन एंड इंटर क्वार्टर रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये क्लियर है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए अपने एजुकेशन की यारी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।